हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास आज डे 5 है और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जीएल पोस्टिंग हम लोगों ने सीखी थी। और जीएल पोस्टिंग में भी हम लोगों ने क्या सीखा था? जीएल पोस्टिंग में हम लोगों ने नॉर्मल एंट्री करना सीखा था, वो भी किस टी कोड पे? FB50 पे। FB50 पे कैसे एंट्री करते हैं, तो जल्दी से एक छोटा सा रिकैप दे लेते हैं। और इसके बाद आज हम लोग को पढ़ना था F-02 प्लस कुछ क्वेरीज थे, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे आज। जैसे कि एक सिंपल सी क्वेरी थी, जिस FB50 में अगर हम एंट्री कर रहे हैं और 24/01/2024, ओके। सो ये डेट में हम एंट्री कर रहे हैं। रेफरेंस नंबर में क्या रेफरेंस नंबर में पकड़ाते हैं? रेफरेंस नंबर बेसिकली रेफरेंस नंबर में जैसे कि हमने डॉक्यूमेंट डेट डालनी होती है और डॉक्यूमेंट डेट के बाद पोस्टिंग डेट डालनी होती है। पोस्टिंग डेट हम सभी लोग समझते हैं, करंट डेट हमेशा रहता है, किस डेट में वाउचर एंट्री कर रहे हो। डॉक्यूमेंट डेट मीन्स इनवॉइस का डेट। व्हाट इज द डेट ऑफ इनवॉइस, वो हम लोग यहाँ रखते हैं। मे बी दिस डेट मे बी सेम एज पोस्टिंग डेट, मे बी प्रीवियस, ओके, प्रीवियस डेट भी हो सकता है। जस्ट लाइक 22 का बिल है बट हम एंट्री आज कर रहे हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आज ही का बिल है आज ही एंट्री कर रहे हैं। बिकॉज सपोज गुड्स कहीं दूर से आ रहा है, 2 दिन पहले निकला था, तो जहाँ से निकला होगा उसने तो उसी दिन इनवॉइस बना दिया होगा ना, 22 तारीख को। आपको 24 को मिला तो आप तो एंट्री 24 को करोगे, बट डॉक्यूमेंट के ऊपर डेट कौन सा लिखा हुआ है? 22, तो यहाँ पे आप 22 कर सकते हो। तो सो ये दो डेट्स होती हैं। नाउ नेक्स्ट, रेफरेंस नंबर में आप इनवॉइस नंबर लिख सकते हो, जो भी बिल नंबर है। तो मैंने कोई नंबर डाल दिया। हेडर टेक्स्ट किस चीज़ की एंट्री कर रहे हैं? जस्ट लाइक हम एक्सपेंस की एंट्री कर रहे हैं, कॉन्ट्रा भी कर सकते हो। क्या सपोज करो, चलो एक्सपेंस पेमेंट ही करते। नाउ नेक्स्ट है क्रॉस कंपनी कोड नंबर। सपोज करो हम दूसरी कंपनी में कोई एंट्री करना चाहते हैं, दूसरी कंपनी के थ्रू हम लोग कोई लेज़र उठाना चाहते हैं समथिंग, तो उस केस में क्रॉस कंपनी कोड नंबर डालते हैं। फिलहाल इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट, कंपनी कोड बाय डिफॉल्ट पड़ा ही हुआ है, उसे आपको चेंज नहीं करना है। नाउ वी नीड टू गो इनटू द GL अकाउंट। सो आई एम टेकिंग माई GL। सपोज I am going to use yesterday I have used marketing expense now. Okay, suppose I'm using repair and maintenance expense. So there is a query that is कि हमारे स्क्रीन में S और H नहीं आ रहा है. Why it is not coming? It is basically when you go into the option, there is a visualization 1. You need to click on this show keys within the drop down list. If I off this and apply an OK, after that you can see H or S is not appearing. To show those things, just go into the option in visualization 1, click on this button, show key within drop down list, and apply an OK. Now S is for debit and H is for credit. Now how much amount? Suppose I am taking 15,000. Now tab, and here we need to put being repair expenses paid, being expense paid I can take, and then hit enter. Now it is showing that posting period 10/2013 is not open, variant 1000. The same error is appearing here. Suppose this types of error is appearing. Now you need to check what is the issue. Double click on it, go into the, just copy the
message and message number. Message number is important. Now you can go in Google, just paste over here. Okay. Now here you can see what is the error. Okay, so when it is showing that the posting period variant, this is the OBY6 error. OBY6 is a code, T code, to define the posting period for each and everything, just like for asset, for GL, for debtor, for creditor, account receivable, accounts payable, you can say OBY6. Okay, but we are not authorized for that to do that. Okay, sometime when you got these types of error, so what do you need to do? You need to message to your senior, suppose. So just copy, take a screenshot of this error, FB50, like this, and you can send this error message to your senior. They will resolve this issue, because these kinds of problems maybe you face in your working. Okay, like this. Clear? Just send it, because we are not able to run this OBY6. Okay, because OBY6, now we need to learn what is OBY6. Suppose and today we also learned some part of enterprise structure. Just like SAP GUI, we learn how to navigate in SAP. We know very well how to create a GL. We also know. Now, enterprise structure. What is the enterprise structure? Suppose you are going to create a company, but one thing is that we are not able to create a company and company code. Some T codes we can run in our system, but most of the T code we are not able to run here. What is company? You can see here, suppose HP Group is a company. Okay, so this is your company, HP Group, and maybe your business in two country, HP India, HP USA. So there is a two company code, HP01 and HP02. HP01 is for HP India, HP02 is for USA. And these both company is comes under this HP Group. Clear? So this is what? This is company. And this is what? This is company code. And these company, we are creating these things separately. When we are going to create a company, there is a separate T code. When we are going to create a company code, there is a separate T code. And after that, what we need to do? We need to assign these company code under this company. Are you getting my point? That means पहले हम company बनाते हैं, फिर इसके बाद हम अलग T code होता है जिससे हम company code बनाते हैं.
ठीक है ना, जिसमें हम इनका करेंसी, सिटी, स्टेट ये सब डिफाइन करेंगे। यहाँ पे भी सिटी, स्टेट ये सब डिफाइन करेंगे। इसके बाद फिर इस कंपनी कोड को हम इस कंपनी से असाइन कर देते हैं, तब ये स्ट्रक्चर बन जाता है, समझ रहे हो, कनेक्टिविटी बन जाती है। क्लियर? नेक्स्ट, what is the chart of account? A single chart of account for this company. All the GL which you are going to create, either in HP India, either in HP USA, all the GL is created in this chart of account. This is the single chart of account. Sometime when you are making any transactions and you want to use the GL which is created by USA, then you can use, just you need to use cross company code. There is a option cross company code. Okay, by using that you can use those GL also. But normally that means you can say a single chart of account, a company having a single chart of account, and all the company code they are creating the GL is saved in this list. You can say this is just like a box where all the GL are saved. Okay, so what is the chart of account, you know, I think. Now the next thing is we need to define fiscal year. Now what is the fiscal year? Fiscal year is a financial year. So suppose HP India, in SAP by default V3 is already available. It is default fiscal year which will start from April to March. Start from April and end on March. We know that this is called UK standard. UK standard. And when we are following USA, we know that there is a fiscal year start from January and end on December. So default fiscal year is also available K4. If you want to create yours fiscal year, you can create. But you need to again understand how to create a fiscal year before that. But if the default codes are available, you can use those things. Now next thing, you need to define the business area. Just like in India, your business is in Delhi, Pune, Mumbai. So you need to create all these business area, and also you need to assign in this company code. Same as you need to define your business area California, New York, okay, Washington DC or something and all, and you need to assign under this company code. Okay. Now the segment and profit center. What is segments of your business? Just like your manufacturing laptop, your manufacturing desktop, your manufacturing accessories also. Yes, these are the profit center. Why we are calling it profit center? Because after selling it we get the profit, so it is also called profit center. इन्हीं को बेच के तो आप प्रॉफिट कमाओगे ना, so इसलिए हमारा ये प्रॉफिट सेंटर है. सेगमेंट, यस, हमारा ये सारा सेगमेंट है हमारा बिजनेस का. Now specification and requirement. The language is most important. Normally we are using English by default. Fiscal year we know that, sorry, accounting system. Yes, in India we need to follow Indian accounting standard. If we are working in US, we need to follow US accounting standard. So accounting system is also important when we are going to create a company. Now the fiscal year, April to March, January to December, July to June maybe. Just like when we are talking about our neighbor country, just like Pakistan, there's a financial start from July to June. Okay. Now next, currency. We need to define the currency. We know that the Indian company will this HP01 having the default currency what? INR, because most of the transaction are in INR. But when we are talking about the US, HP USA, HP02, the currency will be dollar. In SAP, we can maintain multiple currency for a company code, but you need to set any one in default. आप कई करेंसी बना सकते हो, बट उसमें क्या होता है किसी कोई ना डिफॉल्ट सेट कर सकते हो जो बाय डिफॉल्ट है. जस्ट लाइक आप जब जीएल क्रिएट कर रहे थे तो बाय डिफॉल्ट आईएनआर आ रहा था, तो वो डिफॉल्ट करेंसी है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, नोट. बुक्स of accounts are maintained in INR.
but all currency can be used while posting the transaction. Clear? हाँ, कोई भी करेंसी आप यूज कर सकते हो बट मेंटेन करेंगे. हाँ, समझ गए. So the T code, these are the defined company code OX15. जहाँ पे इस तरह के टी कोड्स ओ टाइप का आ गया ना, समझ जाना ये सब कंसल्टेंसी वाले टी कोड्स हैं. बस कुछ टी कोड्स आप कर सकते हो यूज, जस्ट लाइक डिफाइंड कंपनी. OX15, OX15, you can see here IMG, enterprise structure, define financial accounting, define company. So here you can define the company, define company code. This is company and this is company code. Company code T code is OX02, where you are going to create your company code. This is company, this is company code. After that, assign company code to company. देखो दोनों को अलग अलग टी कोड से बनाया ना हमने, फिर इसको इसके नीचे रखना भी तो पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा. तो असाइन करने के लिए अलग टी कोड है OX16. फिर डिफाइन बिजनेस ईयर OX03, डिफाइन फंक्शनल एरिया OKBD. So these are the T codes basically which are using. Functional area in financial accounting are used to define the expenses in a company according to the individual function unit. Functional area हम इसीलिए बनाते हैं ना, just like finance functional area you can say department, you can, है ना. तो किस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हो रहा है, if you want to record it, so it is also important. The most common functional area is manufacturing, sales and distribution, production, administration. इनको आप लोग डिपार्टमेंट बोलते हो, है ना. तो यहाँ पे इसको क्या बोला जा रहा है, फंक्शनल एरिया. जाहिर सी बात और भी फंक्शनल एरिया हो सकते हैं. So suppose we are going to just create a company, we are not able to do more, but some part of this we can. Just like when we're talking about the first T code OX15, you can run. This is enterprise structure. Basically, there is a T code of SPRO. SPRO is used to go into the IMG. IMG means what? What IMG I am talking about? IMG, that means it is used for enterprise structure. You can do the enterprise structure, you can create anything, any structural things you can maintain. You can customize your company according to your requirement. SPRO, when I enter, you can see here, it is not authorized. Okay. So, but there are some T codes are allowed to us, just like OX02, not 02. Okay, it is logged by another user. OX15. OX15. Okay, so suppose we need to create a company. Now you need to click on new entry. What is your company? You need to define the code. Now you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 code. You can only put 6 code maximum. Suppose I am taking the same one, HP01. Sorry, what was that? HP group. So HP G लगा देते हैं. HP G1. Full name HP group. Name company to no. Street. Okay. PO box nothing. Postal code 273001. City. Street means goal. Suppose Durgabadi. Country India. IN
You can also search from this. This is called what? Possible list. When you click on this, that means the possible entry you can see. Sometime in MCQ there is a question, what is the shortcut key to find possible entries? F4. Yes. F4, when you press, the possible entry you can see. Apart from this, we cannot use anything. मतलब इसके अलावा हम कुछ और नहीं select कर सकते वहाँ. Now next, languages. English. EN is for English. Now currency is INR. We are going to take. Just only this you need to do, and after this you can save. If this code is also available, suppose someone is created by this code, so it will show error message, otherwise it will save. Now here you can see the prompt to customizing request. That means you're into the customization. And this is view maintenance data v underscore T880. This is also an MCQ question. When we are going to create anything, or you are customizing anything, so our request goes through what T code, or you can say what number, v underscore T880. That means we are sending a request to create a company. We are sending a request to the server that we are going to create a company, and the request number is v underscore T880. Now request is taking here short description. It is already taken, but we need to define our create request. Here you need to create company. Okay, HPG1. Clear? Now save. This is the button of save button. You can see. Click. Now here you can see the name is now changed. Now after clicking this request is sended. Now here you can see data was saved. Clear? And after that, what we are going to do, we need to, this is created now. Now the second thing we need to do, HP India HP01. That means we need to create a company code. Clear? So define the company code. This is the path, but we are not able to go through the path because SPRO is not allowed to us. If SPRO is allowed, so we can go through the path. But here we need to use OX02, the T code /n OX02. Sometime it has happened to you when you are customizing, because at a time a single user can customize anything. Suppose you are creating a company code, and same time I am going to create a company code. I cannot do that thing because the server is common. Customization, the FS00, just like end user part. Suppose if you are doing FS00, you also can open. I can also do that T code simultaneously. We all both more users can pass the same T code, use same T code. But when we are talking about the customization, at a time a single person can do the customization. समझ गए ना सब लोग? एक समय में सिर्फ एक ही बंदा कस्टमाइजेशन कर सकता है, बट नॉर्मली जो नॉर्मल आपके एंड यूजर के जो टी कोड्स है वो एक समय में बहुत से लोग यूज कर सकते FS00 सब लोग यूज कर सकता है एक साथ. आप भी FB50 में एंट्री कर रहे हो, मैं भी FB50 में एंट्री कर रहा हूँ, समझ रहे हो? वो सब तो कर सकते हो, लेकिन कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते. कस्टमाइजेशन ये सारे जो रेफरेंस है, SPRO वाला जो काम है, SPRO वाला काम एक समय में एक ही बंदा करेगा ना. अब सब लोग बैठ के कस्टमाइजेशन करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते है ना, अब एक वॉल चढ़ाएगा, भाई लेबर का ही होते हैं, मिस्त्री एक ही होता है ना. लेबर का ही रख दोगे, मिस्त्री एक ही होगा जो बताएगा हाँ कैसे कैसे वो लगाएगा ना अपना हिसाब से. बात समझिए? हाँ, अब सवाल उठता है सर दो मिस्त्री भी तो काम करते हैं. बिल्कुल सही. उस टाइम पे हो, जस्ट लाइक मैं FI कंसल्टेंट हूँ तो मैं FI के सारे टी कोड्स रन मारूंगा. तुम वहां पे तुम FI का सारा स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे. तुम MM के हो, तुम MM वाला सारा स्ट्रक्चर तैयार करना. एक साथ कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट. एक दीवार तुम चलाओ, एक दीवार हम चला रहे. बात समझे कि नहीं समझे? इंडिविजुअल जस्ट लाइक आप समझ गए होंगे. नाउ नेक्स्ट, डू यू वांट
टू डिस्प्ले लॉग डेटा। अब क्या होता है, समटाइम अगर ये लॉग डेटा आता है तो उस टाइम पे हम लोग क्या होता है SM12 रन करते हैं। SM12 रन करते हैं तो वहां से हम लॉक हटा भी सकते हैं। ये मेरा लॉक हट जाएगा, मैं अपना फिर से मैं उसको चाहूँ तो रन कर सकता हूँ, बट SM12 इज ऑल्सो नॉट अलाउड टू अस। So we need to wait OX02. Again, I am going to put, okay, I'm just OX02. Normally it is opening like this. Now here you need to create a company code. You need to put at first company, just like we are using ICAX. That is our company code. So you need to define at first code, and then after you need to define the company. What is the name of your company code? Just like HP India, HP USA, like that. But now here you can see the new entry button is not available because someone is using that thing. If I want to check any any company code, so we need to go into the position. Suppose I am finding it ICAX. ICAX is this one. Double click on this and the detail we can check. This is Mumbai city, Mumbai based company, and language is English. Suppose we need to see the more details, you can go into the address, you can check the other details. Clear? The same user, how much? You can go into the IIS and you can, सपोज जब आप करोगे उस टाइम पे सपोज अगर ओपन होगा तो उस टाइम पे कर लेना। कंपनी क्रिएट करना कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। So this is the enterprise structure. Fiscal year, this is the fiscal year. Now we need to understand what is the fiscal year. Now here you can see fiscal year means accounting year. Accounting year may be 12 months for which the company prepare the financial statement. Fiscal year, calendar year may be, non-calendar year may be, shortened fiscal year. Now calendar year means it contains the period of 12 months starting from January to December. Non-calendar year is like April to March, July to June. Shortened fiscal year just like less than 12 months. There are some area just like कुछ ऐसे एरिया भी होते हैं जैसे लाइक रशिया में कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ बहुत ठंडी पड़ती है 3 से 4 महीने, उस टाइम पे कोई काम नहीं होता है। यू नीड टू टेक रेस्ट एट योर होम। -40 डिग्री, -40 डिग्री, -30 डिग्री, सो उस पर वर्किंग नहीं होती, आप घर पे रहो बस जस्ट। तो 4 महीना 3 महीना तो छुट्टी रहती है वहाँ पे। काम कितना होता है, सिर्फ 8 मंथ्स होती है या 9 मंथ्स होती है, तो वो शॉर्टेंड फिजिकल ईयर में भी हो सकती है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, इसी तरह से अगर हम बात करें इंडिया की, तो यहाँ पे शुगर फैक्ट्री होते हैं, तो शुगर फैक्ट्री में पूरे साल भर तो नहीं काम हो सकता है ना, सिर्फ 6 से 8 महीना काम होता है, तो उस समय शॉर्टेंड फिजिकल ईयर आप बना सकते हो। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है अप्रैल टू मार्च। अप्रैल टू मार्च देखो यहाँ पे अगर जनवरी से स्टार्ट करें इसको फर्स्ट मंथ देंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। ओके और अगर तुम नॉन कैलेंडर ईयर लेके चलोगे तो तुम्हारा अप्रैल से फर्स्ट मंथ स्टार्ट होगा, और ये स्टार्ट होगा 1 2 3 4 9 और फिर जनवरी फरवरी मार्च में जाके क्लोज होगा। सही है, 23 22 ठीक है। नीचे वाला ये बता रहा है कि ये सब क्या है, ये 23 में चल रहा है, करंट ईयर है तो 0 है, अगले साल में जाएगा तो -1। Here it is defined, predefined variant available in SAP V3. We know that financial is available, K3 and K4. Now here you can see April to March is 12 normal period and fourth special period. What is the fourth special period? We need to understand what is the fourth special period.